Hello dear students, how are you? I hope you all are doing great. Today we are going to discuss the skeletal system. So let's get started. Skeletal system is the main part of the body that provides strength and gives the body shape in humans. It also helps in locomotion and movement of the body. Okay, so this is skeletal system. It helps in locomotion and the movement of our body. ठीक है, तो इसको जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. इट इज कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड appendicular skeleton. Appendicular skeleton. So in human body you can see the upper limbs and lower limbs are categorized in appendicular system, that is upper limbs and lower limbs, hands and legs, while our body axis, that is our head, chest और हमारा और जो हमारा वो होता है क्या कहते हैं उसे हम रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारे एक एक्सिस के अंदर आते हैं और इसी को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं. एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं जबकि एक्सियल में 80 बोन्स एंड टोटल 206 bones in adult human. Okay, so we are firstly discuss about appendicular skeleton और ये आपको बहुत इजी याद भी हो जाएंगे. ठीक है, तो appendicular skeleton consists of total 126 bones. It consists of 2 hands, 2 legs, two hands consist of 30 bones, and because of 2 it total hand comprises 60 bones, legs comprises 60 bones, 30 bones in both 2 legs, and shoulder girdle consists of 4 bones, and pelvic girdle consists of 2 bones. Total 126 bones in appendicular skeleton. So one by one we will discuss in detail about it. In one hand you can see "30 bones", and these are like this. This is called humerus above the elbow, and radius and ulna below the elbow. Okay, and in our wrist there is carpals and metacarpals of our 5 fingers in palm, and fingers consist of phalanges. Okay, so we will discuss each and every bone. In one hand, firstly humerus in 1 number, second radius, it's also 1, ulna, it is also 1, radius is our thumb side bone, while ulna is finger side bone or little finger. This side bone is known as ulna, which is finger side. Okay, so 3 bones are completed. Now our wrist consists of 8 bones that are known as carpals. Okay,
हम चूड़ी पहनते हैं वहाँ पर हमारी कितनी बोन्स होती हैं? टोटल 8 बोन्स। 5th नंबर पर आता है हमारा पाम। पाम के अंदर क्या होती है? हमारी मेटाकार्पल्स। जो हमारी जो 5 फिंगर्स होती हैं उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 मेटाकार्पल्स 5। Okay, then 6 is phalanges. Phalanges are present in our fingers. Our 4 fingers consist of 12 phalanges. As you can see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 10 11 12. These are 12 in 4 fingers and 2 phalanges. There are only 2 phalanges in our thumb. Thumb consists of only 2 phalanges. So total 14 phalanges in our hand. Total 30. Okay. And in 2 hands, therefore 60 bones are covered here. Now in legs or lower limbs, one leg consists of 30 bones and therefore 2 legs will consist of 60 bones. So 60 bones we have already covered. Now we will discuss about these 60 bones, that is one leg consists of 30 bones. So I'll draw a rough structure. This is our femur. This is there is जो घुटना होता है हमारा, घुटने के अंदर हमारे कौन सी बोन होती है? पटेला. Okay. Tibia and fibula, 2 bones like our radius and ulna. Here are tibia and fibula. Tibia is also known as shin bone because it is shiny. Okay. Tarsals, ऊपर हमारे जो हमारे wrist थी उसमें कौन सी bones थी? Carpals. यहाँ पर tarsals and metatarsals and phalanges. Okay. So one by one. One femur, then one patella, one tibia. Tibia is also known as shin bone. Tibia is toe side, okay, and toe side, and one fibula which is supportive to tibia. Okay, जो हमारी फेब्यूला होती है वो हमारे टीबिया को सपोर्ट करती है और ये हमारे फिंगर साइड से होती है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, टी टी टो साइड, एफ एफ फिंगर साइड, फेब्यूला फिंगर साइड एंड टीबिया टो साइड. ओके, सो आप यहाँ पर इसको अच्छे से याद कर लीजिए. टी से याद रहेगा टो साइड और एफ से याद रहेगा फिंगर साइड. वन टीबिया वन फेब्यूला. ओके, देन नेक्स्ट टार्सल्स. ये कितने 4 बोन्स हो चुके हमारी. टार्सल्स के अंदर हमारी ऊपर हमारी 8 कार्पल्स थी, हमारे 7 टार्सल्स होते हैं. एक बोन हमारी ऊपर कवर हो गई, कौन सी? पटेला. यहाँ पर कौन सी हमारे 7 टार्सल्स है? पहले हमारी कितनी कार्पल्स थी? 8 थी. और 5 मेटाटार्सल, जैसे कि हमारी 5 मेटाकार्पल्स थी बिल्कुल उसी तरह 5 मेटाटार्सल्स. और 14 phalanges as we have discussed already in our hands. So total 30 bones. 30 into 2 60 for 2 legs. 60 plus 60 कितने हो गए हमारे टोटल? 120 बोन्स डिस्कस हो चुके हैं. अब रिमेनिंग कितने रह गए हमारे? सिर्फ 6 बोन्स. अब वो 6 बोन्स को हम डिस्कस करेंगे. 6 बोन्स, 60 बोन्स इन हैंड्स, 60 बोन्स इन लेग्स, दैट इज अपर लिम्स एंड लोअर लिम. टोटल 120. रिमेनिंग कितने रह गए हमारे? 6 बोन्स. ये 6 बोन्स कहाँ पर होंगे हमारे? शोल्डर गर्डल के अंदर. शोल्डर गर्डल कितने हमारे ह्यूमन बॉडी में? 2 हैंड्स 2 शोल्डर गर्डल. और पेल्विक गर्डल कितना है? एक ही है. तो शोल्डर गर्डल के अंदर टोटल 4 बोन्स होती हैं. इनवर्ट shoulder girdle 2 bones and 2 shoulder girdle consist of 4 bones. Here are 4 bones are present.
One shoulder girdle consists of a collarbone, which is also known as beauty bone. One collarbone, that is beauty bone, which is also known as clavicle. Okay, two shoulder girdle, 4 bones, one shoulder girdle, 2 bones. कॉलर बोन जिसको हम क्या कहते हैं, क्लेविकल, और जो दूसरी होती है हमारी स्कैपुला, जो कि हमारी बैक साइड में होती है। ये दोनों बोन्स मिलकर एक शोल्डर गर्डल बनाती हैं, और 2 शोल्डर गर्डल में टोटल 4 हो गए। तो हमारे वर्ल्ड पहले हमने कितने डिस्कस की थी, 120, और 4 कितने हो गए, 124। अब बची 2 बोन्स। वो दो बोन्स कहाँ पर होंगी, हमारी पेल्विक गर्डल के अंदर, जो कि 2 ही बोन्स है और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, टोटल एक पेल्विक गर्डल, जिसके अंदर हमारे जो लोअर लिम्स है वो फिक्स होंगे। So let me write here pelvic girdle, two bones, two hip bones. Okay, two hip bones will make a pelvic girdle. In this, it is a rough diagram I am drawing here. These are 2 legs and 2 hip bones are joined together to form a pelvic girdle. These 2 legs are fixed inside it. These are attached. This is the hip bone, and this total part is known as pelvic girdle. Two hip bones, and there are 4 bones in our shoulder girdle. 6 bones, remaining 6 bones are covered. 120 plus 6, 126 bones in appendicular skeleton are covered. So this is the video. Hope you all understood it.